हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल वी कैन हील। तो आज ये वो वीडियो बहुत डिफरेंट टॉपिक पे है। वो है प्रोक्रास्टिनेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन ही बहुत डिफिकल्ट है, तो लोग कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं या इतना बात नहीं करते। तो इसमें प्रोक्रास्टिनेशन, ओके, इट इज़ वेरी easy if you break it, but उसको एक साथ बोलने में टाइम लगता है। तो that is the funny part. I tried to find out a simpler word for the same, but I could not. तो हिंदी में तो बोलते हैं कि टालना काम को, और इंग्लिश में हम ऐसे ले सकते हैं कि delaying the work to the last minute. तो why do we do it? Is there a subconscious reason or some mental emotional reason to it, or is just a habit? So the habit is always developed subconsciously, और क्योंकि वो सबकॉन्शियसली हो रहा है हमें पता भी नहीं चलता, हम उस चीज को अडाप्ट कर चुके हैं अपनी लाइफस्टाइल में। तो हम किसी चीज को क्यों टालते हैं? अगर वो बहुत इजी है तो हम कहते हैं कि भाई इजी हम कभी भी कर सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट है तो हमें लगता है कि भाई हम इतने कॉन्फिडेंट या इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि हम उसको फिनिश कर सकते हैं, इसलिए हम उसको टाल देते हैं। नाउ देयर इज वन मोर विच इज इंटरमीडिएटली और ऑप्टिमली डिफिकल्ट. Now the optimally difficult one, if it is taking too much time, then we are like, oh, we are not going to be able to finish it, so why start it? And if it is going to take too less of a time, it is equally challengeable, but you can finish it off because you know the trick. Then you'll be like, I can finish it off, why should I do it right now? I can do other things right now. And you sit there doing overthinking or idling or social media, trivial things, okay? And that's how you delay until there is a bell or there is a deadline that comes up, and this leads to a lot of stress, a lot of time management is not there, then a lot of always pending task piling on. Okay, so how can we deal with it? So subconsciously this is because we think we are not that good enough to be able to do every task or any task or all task perfectly. Perfectly नहीं कर सकते हैं इसलिए छोड़ देंगे, या नहीं कर सकते हैं इसलिए छोड़ देंगे, या फिर हमारे लायक नहीं है, हमसे ना हो पाएगा इसलिए छोड़ देंगे. How you can deal with it is first the positive psychologically way is you write a affirmation that I am good enough and I will complete at least 10 tasks every day. And the workable solutions like atomic habits, the smaller habits which you can develop, is one of them I'm going to reveal here. That is, you can start identifying what kind of task are you really delaying, and you can give yourself incentives to do it. So that is one of the solutions to it. For more, please contact me on my number or on my channel and let me know. I will help you out. Please heal. Thank you.